Hello and welcome students in another video lecture of my video lecture series on the subject of botany। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बॉटनी और इसमें हम फोकस कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पार्ट के ऊपर। और हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है वो किस तरह प्रोकैरियोट्स में होती है, कौन से स्टेप्स उस प्रोसेस के अंदर है। हमने देखा प्रोकैरियोट्स में प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है ये 3 स्टेप्स में होती है। एक पहले स्टेप है इंसेशन का, फिर जिसमें प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, इसके लिए सिग्मा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। फिर हमारे पास है चेन एलांगेशन में राइबो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए जाते हैं बेस्ड अपॉन द सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन द टेम्पलेट आरएनए। एंड यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी ऑफ द बेसिस जो है वो फॉलो किया जाता है। और हमने ये भी देखा कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में टर्मिनेट किस तरह होती है। उसके लिए हमारे पास एक प्रोटीनिशियस फैक्टर है, उस प्रोटीन फैक्टर को हम बोलते हैं रो फैक्टर, हम उसको बोलते हैं। एक प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन जो है ये एक्ट करता है एज ट्रांसक्रिप्शनल टर्मिनेटर। ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को टर्मिनेट करता है, एंड करता है। उस जब ये रो फैक्टर एसोसिएट हो जाता है आरएनए पॉलीमरेज के साथ, ये आरएनए को भी डिसोसिएट करता है और उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज को भी डिसोसिएट करता है। और हमने देखा प्रोकैरियोट्स में जो है एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज सारे एमआरएनए सारे जो है आरएनए जो है उनकी ट्रांसक्रिप्शन करता है। यानी एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज जो है responsible है for the synthesis of messenger RNA, for the synthesis of ribosomal RNA and for the synthesis of transfer RNA। मैं यहाँ पे पिछले क्लास में मैंने एक पॉइंट आपको गलती से बताया कि जो मैंने आपको सिस्ट्रॉन्स की बात की थी, अगर जहां तक यूकैरियोट्स का ताल्लुक है, यूकैरियोटिक जीनस जो है स्ट्रक्चरल जीनस जो है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक है, वाइल एज प्रोकैरियोट्स जो है दे आर पॉलीसिस्ट्रॉनिक। पी प्रोकैरियोट है, पी पॉलीसिस्ट्रॉन हो गया। Prokaryotes are polycistronic, means prokaryotic structural genus code for more than one type of protein or polypeptide, while as eukaryotic structural genus they code for a single type of protein or polypeptide। Remember this unfortunately I told you a reverse of this in the previous lecture, although I have added a tag there in the lecture। I hope that you have remembered, you will now remember that कि prokaryotes जो है वो polycistronic है, while यूकैरियोटिक स्ट्रक्चरल जीनस जो है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक है। आज हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स भी उसी तरह होती है जिस तरह ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में होती है। उस ट्रांसक्रिप्शन के भी 3 स्टेप्स है, इंसेशन स्टेप है, एलांगेशन स्टेप है, टर्मिनेशन स्टेप है। लेकिन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स इज समवट कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्रोकैरियोट्स। How it is complex and different from that of the prokaryotes? First thing is that the process of transcription in case of eukaryotes involves 3 different types of RNA polymerases in addition to the RNA polymerases that are present in their cell organelles. Remember how the process of transcription is different in case of eukaryotes. The first point is that the process of transcription in case of eukaryotes involves 3 different types of RNA polymerases for synthesis of different types of RNA, and in addition to the RNA polymerases that are present in the cell organelles in case of chloroplasts and mitochondria। And remember, we are having 3 types of RNA polymerases in case of eukaryotes। We are having RNA polymerase first, we are having RNA polymerase second, and we are having RNA polymerase third। And remember, RNA polymerase first is responsible for the synthesis of ribosomal RNA। Remember मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम्स जो है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें डिफरेंट कंपोनेंट, उसमें प्रोटीन, वो राइबोसोम जो है वो बनी है प्रोटीन्स और वो बनी है आरएनए की। जो आरएनए है उस राइबोसोम के अंदर वो भी डिफरेंट है। तो हमारे पास अगर हम यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात करेंगे, हमारे पास यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो एटीएस राइबोसोम्स होते हैं। अगर हम एटीएस राइबोसोम्स को स्प्लिट करेंगे हमारे पास 2 सब यूनिट्स बनेंगे, 60s राइबोसोमल सब यूनिट और 40s राइबोसोमल सब यूनिट। अगर हम 60s को फर्दर स्प्लिट करेंगे हमें मिलेंगे 28s राइबोसोमल सब यूनिट, 18s राइबोसोमल सब यूनिट, 28s राइबोसोमल सब यूनिट, 5s राइबोसोमल सब यूनिट एंड 5.8s राइबोसोमल सब यूनिट। इसी तरह अगर आप 40s राइबोसोमल सब यूनिट को फर्दर ब्रेक करोगे आपको मिलेगा 18s राइबोसोमल आरएनए उसके अंदर। तो हमारे पास यूकैरियोटिक राइबोसोम के अंदर 4 तरह के राइबोसोमल आरएनए होता है। एक 28s राइबोसोमल होता है, एक 18s राइबोसोमल आरएनए होता है, एक 5.8s
8s राइबोसोमल आरएनए होता है, एक 5s राइबोसोमल आरएनए होता है. RNA polymerase first is responsible for synthesis of ribosomal RNA, but remember only 28s ribosomal subunit is synthesized by RNA polymerase first, and 18s ribosomal subunit and 5.8s ribosomal subunit. रहता कौन है? हमारे पास रहता है 5s ribosomal RNA. Remember RNA polymerase second it carries out transcription of tRNA, it carries out synthesis of tRNA along with the synthesis of 5s ribosomal RNA, plus it carries the synthesis of snRNA, small nuclear ribonucleic acid, snRNA, small nuclear RNA. रिमेंबर आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है ये सिंथेसिस करता है राइबोसोमल आरएनए को, और ये 28s, 18s और 5.s राइबोसोमल आरएनए जो है ये आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बनाता है. आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है ये ट्रांसफर आरएनए की सिंथेसिस करता है, प्लस ये सिंथेसिस करता है 5s राइबोसोमल आरएनए का, और ये सिंथेसिस करता है एसएनआरएनए. एसएनआरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए. रिमेंबर एसएनआरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए. आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है इट कैरीज आउट सिंथेसिस ऑफ प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए. उस प्रिकर्सर को हम बोलते हैं एचएनआरएनए. ये याद रखना, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है ये एचएनआरएनए बनाता है. इस एचएनआरएनए में हेटेरो न्यूक्लियर आरएनए. रिमेंबर एचएनआरएनए इज हेटेरो न्यूक्लियर आरएनए. यूकैरियोट्स में जो आरएनए बनता है मैंने आपको पहले ही बताया वो अनप्रोसेस्ड होता है, उसको हम बोलते हैं हेटेरो न्यूक्लियर आरएनए. इस हेटेरो न्यूक्लियर आरएनए की बाद में प्रोसेसिंग होती है. क्या प्रोसेसिंग होती है वो अब थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे. शाबाश, क्या प्रोसेसिंग होती है ताकि ये एचएनआरएनए जो है बाद में कन्वर्ट होता है किस में? एमआरएनए में. ये बनाता है कौन? हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज थर्ड. सो रिमेंबर there are different types of RNA polymerase is responsible for synthesis of different types of RNA. In case of eukaryotes, RNA polymerase first is responsible for synthesis of ribosomal RNA, particularly 28s ribosomal RNA, 18s ribosomal RNA and 5.8s ribosomal RNA. RNA polymerase second is responsible for synthesis of transfer RNA, which it carries out the synthesis of 5s ribosomal RNA and small nuclear RNA or ribonucleic acid snRNA. While as RNA polymerase third it carries out the synthesis of precursor of mRNA. Text में लिखा है precursor of mRNA. Precursor of mRNA is heteronuclear RNA, hnRNA. This RNA undergoes a number of modifications and ultimately it gets converted into mRNA. This is one difference in terms of process of transcription in case of prokaryotes and in case of eukaryotes. So we will remember that the process of transcription in case of prokaryotes is carried out by a single polymerase, while as the process of transcription in case of eukaryotes is carried out by three different types of RNA polymerases. And second thing is that I told you that once the process of transcription takes place, in case of eukaryotes, we get an RNA molecule that is called as hnRNA, heteronuclear RNA. See here, once the process of transcription takes place, we get an RNA molecule. That RNA molecule is called as heteronuclear RNA, and this RNA has both coding regions and non-coding regions. See, this region, this is non-coding region present in the RNA. This is non-coding region present in the RNA, and this is non-coding region present in the RNA. This is my hnRNA, and this hnRNA has a number of non-coding regions. Those non-coding regions are called as introns. Before the process of translation, or before, and one thing I will tell you that this process of transcription in case of eukaryotes takes place inside the nucleus. See, this is the cell. ये सेल है, this is the cell, this is nucleus, and we have got this is hnRNA. This hnRNA has introns, इसके अंदर introns है. So we have to remove these introns, we have to modify this hnRNA, and after modification of this hnRNA you will get mRNA. This mRNA is then sent outside the nucleus into the cytoplasm where our ribosomes are present. These ribosomes, they are the protein factories. They will use this mRNA then
to carry out the process of translation, the protein synthesis. So इसलिए मैंने आपको बताया ये जो HNRNA है, it is synthesized within the nucleus, and this HNRNA undergoes a processing, a modification before it is being sent to the cytoplasm for the process of translation. The first modification that this HNRNA undergoes is capping. It means addition of. What modification happens in HNRNA? Shabash, modifications. Yeah, processing in HNRNA, modifications, yeah, processing in HNRNA. What happens? First, this HNRNA undergoes capping. Capping is simply addition of. Capping is simply addition of a special nucleotide, that is methyl guanosine triphosphate at the 5' end of HNRNA. And remember, this process of addition of a special nucleotide, that special nucleotide is methyl guanosine triphosphate. It is simply represented as M is methyl, G is guanosine. There are 3 phosphates, so this is methyl guanosine triphosphate. What we did, once this HNRNA is formed, we carry out the capping, addition of 5-methyl guanosine triphosphate cap at the 5' end of HNRNA, and this addition of 5-methyl guanosine triphosphate cap is carried out by an enzyme. That enzyme is called as guanyl transferase. So first capping is done. हमारे पास जो HNRNA है, उस HNRNA के 5' एंड पे एक कैप ऐड की जाती है. विद द हेल्प ऑफ उस कैप को हम बोलते हैं 5-methyl guanosine triphosphate कैप, और ये कैप ऐड की जाती है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम. दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज guanyl transferase. एंड रिमेंबर व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ एडिशन ऑफ दिस कैप एट 5' एंड when because we have to transport this HNRNA, this RNA from nucleus into the cytoplasm for the process of translation to take place in the cytoplasm. इस दौरान जब हम ये ट्रांसफर होगा, there are every chance that this RNA may be degraded by nucleases, the enzymes that degrade nucleic acids. So this 5-methyl guanosine triphosphate cap जो है, it prevents the degradation of this mRNA from the nucleases, from the enzymes that degrade this mRNA or RNases. This is one point, that it protects this mRNA from degradation from nucleases, from RNases, because it is RNA. So RNA degrading nucleases are called as RNases. And second point is that कि जब process of translation start होना हो, there should be some site, क्योंकि इस mRNA को हमने mRNA से प्रोटीन्स बनाने हैं, तो ये राइबोसोम शुड गेट अटैच्ड टू दिस mRNA at a certain place, at a certain site. So this 5-methyl guanosine triphosphate cap acts as a binding site. Remember, it acts as a binding site for ribosomes to get attached to this mRNA. So it has 2 purposes. One is that this capping has 2 purposes. One is that it prevents degradation of RNA while it is being sent from nucleus to the cytoplasm. Second is that it acts as a ribosomal binding site. Remember, it acts as a ribosomal binding site. Second step is, once capping is over, second step is splicing. Second step is splicing in the modification of HNRNA. Splicing is removal of introns. I told you that we have got HNRNA. This HNRNA has as non-coding regions. So these non-coding regions are these are non-essential regions present on HNRNA, and these are extra regions present on this RNA. So before the process of translation, we have to remove these non-essential, non-coding regions from this what is called as HNRNA. We have to remove these non-coding regions. These non-coding regions are called as introns. So removal of introns from HNRNA is called as splicing. And remember, this is called as splicing, or this is called as RNA splicing. And this splicing is carried out
by special, special biochemicals. Those special biochemicals are known as snRNPs. Remember, small nuclear ribonucleoproteins. These are derived proteins. This is carried out with the help of some derived proteins. Those derived proteins are called as small nuclear ribonucleoproteins. And what actually these small nuclear ribonucleoproteins are, they are formed by the combination. They are complex proteins formed by combination of snRNA, ribosomal small nuclear ribonucleic acid and protein. So when snRNA and proteins get associated with one another, they lead to the formation of complex proteins. Those complex proteins are called as snRNP, small nuclear ribonucleoproteins, or they are also pronounced as SNRPs. snRNPs are also called as SNRPs. They are also pronounced as SNRPs or snRNPs. SNRPs इनको बोलते हैं small nuclear ribonucleoproteins. So small nuclear ribonucleoproteins, they actually form a structure. That structure is called as spliceosome. This spliceosome is formed by these snRNPs. snRNPs in turn are formed from proteins and snRNA, and this spliceosome carries out removal of these non-coding regions or introns from this hnRNA. And once these introns are removed, then these exons are joined with the help of DNA ligase. Exons are joined with the help of ligase enzymes. Ligase enzymes, you know that they carry out ligation. They form they form phosphodiester bond. They carry out ligations here by removal of introns. A gap was developed. This gap is sealed. Yani two exons are joined now with the help of this ligase enzyme. So the second step is splicing. Splicing is removal of introns from hnRNA. This is carried out by a structure. That structure is called as spliceosome. This spliceosome is made up of snRNPs, small nuclear ribonucleoproteins, and these small nuclear ribonucleoproteins are complex proteins formed by association of proteins and snRNA. Remember this. And third step is called as polyadenylation. Polyadenylation is simply addition of adenylate or simply adenine tail. Shabash, at the 3' end of hnRNA. So पहले स्टेप में हमने कैपिंग किया, दूसरे स्टेप में हमने स्प्लाइसिंग किया, तीसरे स्टेप में पॉलीएडेनाइलेशन किया. पॉलीएडेनाइलेशन इज सिंपली एडिशन ऑफ एडेनाइलेट टेल. कितना लंबा होना चाहिए? एडिशन ऑफ एडेनाइलेट टेल और एडेनिन टेल. हम एडेनिन से ऐड करते हैं एट द 3' एंड. हमारे पास hnRNA था, 5' एंड पे हमने कैप लगाया, इंट्रॉन्स रिमूव किए. जो 3' एंड है यहाँ पे हम क्या करते हैं? एडेनिन ऐड करते हैं. यहाँ पे आपको दिखाता हूं, ये हमने 5-मिथाइल गानोसिन कैप ऐड किया, ये हमने इंट्रॉन्स रिमूव किया. अब हमने क्या किया? पॉलीएडेनाइलेशन एट 3' एंड किया. 3' एंड जो इस hnRNA का है उस पे हमने काफी सारे एडेनिन ऐड किए. कितने एडेनिन ऐड किए? 203 एडेनाइलेट सम या एडेनिन हमने ऐड किया 3 end of this hnRNA. This process is called as polyadenylation, and remember the process of polyadenylation is catalyzed by an enzyme. That enzyme is called as polymerase, and this polyadenylation is carried out in template independent manner. It means that जब आप ये काफी सारे A's ऐड करते हो, आपको किसी टेम्पलेट की जरूरत नहीं है, किसी से ये इंफॉर्मेशन कॉपी करनी नहीं होती है. आप सिंपली A's ऐड करते जाते हैं without using any strand for copying information from that. So this is called as, this is template independent synthesis of Pol A tail. Template independent synthesis of Pol A tail is called as polyadenylation. 200 to 300 adenylates or adenine base are added to the 3' end of this hnRNA with the help of an enzyme that is called as poly A polymerase. Remember, the enzyme is called as poly A polymerase.
पॉलीमरेस, क्योंकि ये एंजाइम जो है ये काफी सारे एडेनिन्स 200 से 300 एडेनिन्स टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में ऐड करता है टू द 3 प्राइम एंड ऑफ HNRNA। तो इस तरह जब हमने कैपिंग किया 5 प्राइम एंड का, और मैं आपको बताना चाहता हूं एडेनिन्स हम 3 प्राइम एंड पे ऐड करने का मतलब क्या है। अगेन द पर्पस इज टू प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ दिस mRNA, degradation of this mRNA while it is being sent from nucleus to the cytoplasm for for the process of translation to take place। तो मैंने आपको बताया ये प्रोटेक्ट करता है, जिस तरह 5-methyl कैप जो है वो प्रोटेक्ट करती है उसको mRNA को फ्रॉम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, इसी तरह ये जो है पॉल ए टेल भी इसको mRNA को बचाता है फ्रॉम डिग्रेडेशन दैट मे बी डन बाय द न्यूक्लियस। सो 5-methyl गानोसिन कैप का भी पर्पस है प्रोटेक्शन, और पॉल ए टेल का भी पर्पस है प्रोटेक्शन। दूसरा 5-methyl गानोसिन का एडिशनल बेनिफिट है दैट इट एक्ट्स एज अ राइबोसोम बाइंडिंग साइट, तीसरा पॉइंट जो है पॉल ए टेल जो है इट प्रिवेंट्स द स्ट्रेचिंग ऑफ दिस RNA, इट प्रिवेंट्स द शॉर्टनिंग ऑफ दिस RNA, ये RNA की शॉर्टनिंग को भी प्रिवेंट करता है। तो याद रखना प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है यूकैरियोट्स में somewhat elaborated है, because we have different types of RNA polymerases for different types of for senses of different types of RNA. This is one point. Second point is that once this RNA is formed, the process is not over. This process as a ribosome binding site. Once capping is done, then splicing. That is called as spliceosomes. Spliceosomes are basically made up of SN ribonuclear proteins, and small nuclear ribonuclear proteins are basically complex proteins formed by the combination of proteins with SN RNA, small nuclear RNA. Then once splicing is done, polyadenylation is carried out. Polyadenylation is simply addition of pol A tail to the 3' end of HNRNA with the help of an enzyme that is called as pol A polymerase. This pol A tail prevents again the degradation of this mRNA while it is being sent from the nucleus to the cytoplasm. So once all these 3 steps are done, now we are having RNA. That RNA is called as mRNA. So this HNRNA, earlier we were having HNRNA. This HNRNA से हमने बनाया mRNA through a number of modifications. This modification does not take place in prokaryotes, while as this modification takes place in case of eukaryotes. And the necessity of all these steps, particularly the process of splicing, indicates the dominance of RNA world. Remember, the necessity of all these modification in case of eukaryotes, particularly the process of splicing, the removal of introns, indicates the dominance of RNA world. And shabash, the presence and one more thing is that the presence of introns is a reminiscent of the antiquity. It reminds us something of the ancient world living organisms. So this is all about the process of transcription. I hope that you have understood the process of transcription, the way it occurs in prokaryotes and the way it occurs in eukaryotes. Thank you one and all for watching this video lecture.